हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लामेशन, हीलिंग एंड रिपेयर के एमसीक्यूज़। टुडे वी विल डिस्कस 10 एमसीक्यूज़। देयर आर 15 एमसीक्यूज़ इन दिस शीट फॉर दिस टॉपिक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट, द इमीडिएट वैस्कुलर रिस्पॉन्स इन एक्यूट इन्फ्लामेशन इज। इन एक्यूट इन्फ्लामेशन इमीडिएट वैस्कुलर रिस्पॉन्स क्या है? तो ऑप्शंस देखते हैं। वैसोकंस्ट्रिक्शन, वैसोडाइलेटेशन, स्टैसिस ऑफ ब्लड एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो करेक्ट ऑप्शन इज वैसोकंस्ट्रिक्शन। वैसोकंस्ट्रिक्शन, इट इज द immediate vascular response in acute inflammation. Next, the cardinal signs of inflammation are all except. Options: rubor, calor, dolor, pallor. The correct option is pallor. There are 4 cardinal signs of inflammation: rubor, tuber, calor, dolor, but there is a pallor is not included in this cardinal sign of inflammation. Next, increase in vascular permeability is mainly due to. Vascular permeability किससे increase होती है? So options are vasodilation, stasis of blood, endothelial damage and change in axial flow of blood. The correct option is endothelial damage. So endothelial damage की वजह से vascular permeability increase होती है. Next, the neovascularization is the term used for. न्यूवेस्कुलराइजेशन ये टर्म किस लिए यूज होती है? तो ऑप्शंस देखते हैं। रप्चर्ड कैपिलरी, न्यू कैपिलरी फॉर्मेशन, इंगॉर्स कैपिलरी एंड ब्लॉकेज ऑफ कैपिलरी। द करेक्ट ऑप्शन इज न्यू कैपिलरी फॉर्मेशन। नेक्स्ट, द 6th नंबर, द प्रोसेस ऑफ escaping of neutrophils out into the extravascular space is termed as. एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस में न्यूट्रोफिल्स escaping आउट होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर फैगोसाइटोसिस, इमाइग्रेशन, अडेजन एंड कीमोटैक्सिस। करेक्ट ऑप्शन इज इमाइग्रेशन। नेक्स्ट, डायपेडिसिस इज अ पासिव प्रोसेस ऑफ escape ऑफ। डायपेडिसिस ये कौन से कंपोनेंट की escape की पासिव प्रोसेस है? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डायपेडिसिस मतलब होता क्या है। The meaning of diapedesis: passage of the blood cells through intact wall of capillaries. Options देखते हैं। Erythrocytes, leukocyte, thrombocyte and plasma cell. Correct option is erythrocytes. Next, the transmigration of leukocytes after crossing several barriers to reach the interstitial tissue is called as. Options are rolling, adhesion, chemotaxis and phagocytis. The correct option is chemotaxis. 9th, all are the stages of phagocytosis except. मतलब कौन सी स्टेजेस फैगोसाइटोसिस की नहीं है वो हमें डिटेक्ट करना है। तो ऑप्शन रोलिंग एंड अडेजन, रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट, इंगल्फमेंट, किलिंग ऑफ एंड डिग्रेडेशन। करेक्ट ऑप्शन इज रोलिंग एंड अडेजन बिकॉज रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट एंड इंगल्फमेंट एंड किलिंग एंड डिग्रेडेशन आर द stages of phagocytosis. Next, 10. Reed-Steinberg cells is a giant cell seen in. Reed-Steinberg cell ये किस में देखा गया है? ऑप्शंस आर giant cell tumor, schwannoma, hemangioma and Hodgkin's lymphoma. The correct option is Hodgkin's lymphoma. Hodgkin's lymphoma में giant cell का Reed-Steinberg cell type देखा गया है. Thank you for watching.